we have elections coming in Canada. So we were all invited. जो भी again I am the president of Rana Canada plus तो CGI भी आए हुए थे और Okay. मिस्टर सारी भी आए हुए थे. निधि जी आप बताइएगा whenever अंशु जी you are ready because yeah, we are live now, sir. So okay, ठीक है. So Krishna ji will carry on this. thank you so much. So good evening, everyone. Namaskar. I welcome you in the series of Hum Rajasthani by Rajasthan Foundation and Simply Jaipur. हम राजस्थानी कार्यक्रम में हम आपको रूबरू करवाते हैं राजस्थान मूल के निवासी उन व्यक्तित्व से जिन्होंने अपनी लगन से, अपनी मेहनत करके कुछ न कुछ जिंदगी में हासिल किया है. और इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं यंग अचीवर निखिल मेहता से. Achievers never expose themselves, but their achievement does. Young blood, big dreams, and great ideas. This is all about Nikhil Mehta. He is awarded by Good Samaritan International Award by CM of Rajasthan, Shri Ashok Gehlot ji. The most innovative idea by Union Minister of State for External Affairs. So that's again a very big round of applause for Nikhil Mehta. And he wrote and designed and illustrate the guide of praising health issues, COVID-19 guides, were exhibit at New York Department of Education and Miss Smithtown School of district website. So I welcome Nikhil Mehta, but before that, I also welcome Shri Dheeraj Srivastava sir, Commissioner, Rajasthan Foundation, for a welcome note. Shri Dheeraj Srivastava sir. Thank you very much, Nidhi ji, for your excellent support in this unique program called Hum Rajasthani. I extend a very warm and cordial welcome to everyone present here in our special episode of Hum Rajasthani with our very young and talented Nikhil Mehta. Nikhil ji, we are delighted to have you with us and on this platform of Hum Rajasthani. Hum Rajasthani is a global platform that offers us the opportunity to connect with eminent guests and personalities all over the globe who share their life journey with us from their ups and downs and their journey to success. Continuing on this theme, we have invited our esteemed guest, Mr. Nikhil Mehta, a young social entrepreneur who has been in the forefront of many healthcare-related initiatives in Rajasthan and globally recently during the pandemic times. Even at such a young age, he has shown passion and determination to make our world a better place to live. In this special episode, we will listen to the encouraging story of Nikhil Mehta, who represents the third generation of pravasi family, born and brought up in USA. I must say Nikhil has been a trailblazer when it comes to social initiatives. He has undertaken several steps to support his motherland. He is an inspiration to all of us as to how we can contribute towards the upliftment and support those in need. He is a role model in real sense of the word for the NRR youth and has set an example for everyone. He has been actively involved in the COVID-19 relief platform by participating in the Oxygen on Wheels initiative, where he spearheaded, organized and provided oxygen concentrators to Rajasthan. Furthermore, he was also awarded, as Anshuji just now informed, the Good Samaritan International by Chief Minister Mr. Ashok Gehlot for creating and expanding ambulance systems throughout rural villages of Jodhpur. He also came up with the idea of mobile vans, which results into initiative of providing free artificial limb fitments to differently able people by Jaipur Foot of USA. As you would be aware that Nikhil is also the Chief Youth Coordinator of Jaipur Foot USA, and Mr. Prem Bhandari
has been the mentor and the guiding force. Through him, he has undertaken all the young ideas forward. He is also the founder of NextGen Guides, where he writes, designs, illustrates guides on pressing health issues. We wish Mr. Nikhil Mehta all the success in the world. May his passion towards social welfare continue to grow, and we hope his example encourages more Rajasthani youth to contribute towards the welfare of their community. We hope to collaborate with him on future projects and work with him not only towards social upliftment, but also towards encouraging the youths of Rajasthan. Uh, I don't know, many of you might have seen the program where Nikhil had spoken in a program attended by our Chief Minister, Mr. Gehlot, and the word of praise he heaped on him uh, by saying that, he has set an example for the next generations, how they can remain associated with their motherland. So, Nikhil, all of us are really waiting eagerly to hear your motivational and enthusiastic story. Anshuji, a very warm welcome, and Rajasthan Foundation is really thankful for your continuous support to connect our Rajasthani pravasis with their homeland. Before I hand over to you, Anshuji, I also take this opportunity to welcome Vivek, Dev, and many others, Mr. K.K. Mehta, Prem Bhandari ji, they are all joining. Many of our pravasi heads of global associations have already joined, and people from all corners of the world, including the country and abroad, they have taken their time out. Thank you, everyone, and we look forward to hearing from Nikhil now. Thank you. Thank you so much, sir. Khamagani, pranam to everyone. And yes, this is a very special episode because this is the very first time that young achievers just age of 17 or 18 years has come into Hum Rajasthani. So I welcome Nikhil, and my first question is from you is, tell us about your childhood and about your school memories. So I was born in the USA, of course, in Long Island, New York, and my childhood was always surrounded by family. I lived in an extended family with my nana, nani, mama, ji, and mama. During that time, my parents were training hard to become doctors, right? So my young years were mostly mentored and taken care of by my grandparents, which are Kanak and Prabagolia. So every day, I recall before going to school, my nanny would wake me up in the very early morning and take me to the temple. And downstairs in our basement was a temple. So we would go and say 5 Navakara mantra 5 times and bowing down to our gods, asking for blessings, giving me the knowledge and courage to do well in my studies. That's how my day began every day. So how about your school? Yeah, how about your school days when you went to school in your early childhood? Any sweet memories? Any teacher remembrance? The best teacher of your who motivates you? Do you want any of them? So my school years were a lot of fun. My favorite subject in class was obviously mathematics and science. And I remember always finishing first in class. And I remember when I used to get like a 99 on my exam, my grandma would say, "Where's that 1 point?" And besides that, my favorite teacher was one of my favorite teachers was 7th grade, my math teacher, Mr. Tursland. He always encouraged us, always incorporated fun ways to do mathematics together. Very interesting class. He made my love for math very strong. Besides that, in school, I was a very avid tennis player, and I played the violin in the orchestra. And I was very good at playing the violin in general. I used to put on lots of shows in my school. Yeah, those are some good memories. So what is your daily routine? How you spend your 24 hours a day? You are a great achiever. You are a great innovator. You have a very innovative mind. So how about your 24 hours of a day? Although my daily routine may not be all that exciting, it's definitely busy
and it consists of a lot of activities. So as my parents say, since I'm young right now, going into 12th grade, about to start adulthood, my job is to study, and hence that's my life story. My day begins with asking for Ashura in the morning, obviously after showering and brushing my teeth, and going downstairs asking God for blessings to do good on my SAT, which I'm taking soon this Saturday, and I'm also applying to colleges. So as a rising senior or someone who's going into 12th grade, I've chosen to go into the medical field, right? So my application season has begun. This means writing lots and lots of essays. My schedule is pretty much very, very busy, hectic. I've been taking several college level courses, and hence I spend over like 5-6 hours just studying. I take breaks sometimes with my little brother Kush and my sister Luvi. We play basketball outside, and we also love to play canasta, especially on Fridays. On Fridays, my grandparents come to my house, all together, sit in a circle, make some nice Indian food, very good Indian food. We also have very, very intense games of canasta and all the chogari and all these funny card games that we play. Okay, great. So, Blossom Charity is your initiative. Tell us about something about your charity program. So this all started when I visited Mumbai, actually, for a cousin's wedding in 2019. I was staying in a 5-star hotel, very, very nice, luxurious hotel. However, around me were all these slums. So I remember one day I went outside and I saw all these kids rummaging through the garbage can looking for food, young girls carrying kids alongside with them. And I remember giving a little change, not even much. That's all I had. I think I gave 30 cents to one little girl. 20 girls came around me trying to ask for money. And from that moment, I felt very guilty, very sad for them. So I wanted to give them hope. So I talked to my grandparents about what I could do for the kids, right? And they introduced me to a numerous amount of charities involving producing clean water, basic education in the slums. So this was a once in a lifetime opportunity to create the Adopt a Slum program, which is a program under my Blossom charity, to increase youth and community awareness and involvement. The main goals of my program were to open teaching centers and to break the cycle of illiteracy and poverty to meet the basic necessities of life. With the help of the Manav Mandir mission and the Varayatan community, we solely adopted this program and we made regions of slum kids and provided clean water, food, literacy. We opened 3 different teaching centers in the Delhi slums, extending from Rajgir to Indore cities. And from there, that's how my Blossom charity began, to create awareness among the youth and motivate others to be involved in the United States as well. Great. Who is your inspiration? What motivates you in life to do all these works? So I'm very lucky to be surrounded by a lot of kind-hearted, generous, and motivated people while growing up. They've all had my back and always served as role models for me. My grandparents, Kanak and Prabha Golia, are one of my biggest motivations. They've helped generously. One of the most generous people I've ever met in my entire life. I can talk about numerous occasions where they've changed people's lives, give them education, help them selflessly. My Nana treats everyone with fairness, kindness, and my grandmother is one of the most sweetest women you'll ever meet. She's devoted to everyone except herself. There have been so many people, and they've involved so many charities and give without a second thought. They're truly my inspiration. If I can achieve, half what they can, it will be amazing. Additionally, my parents, who are both gastroenterologists, they have a big practice, very, very successful people who worked hard for what they deserve. I always hear praises about them, even though my mom is very tired. She always responds to my phone calls when I hear her talk. I'm always surprised how she comforts all the patients around her. She wakes up in the morning, 6 a.m. in the morning, goes to work. My dad also works almost 6-7 days a week, every single day, and they inspire me to become a doctor because I see how they can change people's lives every day. So you are awarded by the Most Innovative Idea Award by Foreign Ministry. So how do you generate the new ideas?
when you really care about something and are constantly thinking about it over and over in your mind, you come up with a variety of different ideas which you think could work. I've always been very, curious, creative, trying to combine new innovations, incorporate technology into what we have to help people. So raised in this very generous environment again, where my grandparents are always thinking about people, my parents are saving lives every day. They're also my inspiration. They help me create these new ideas, especially with the 21st century. We have so much technology, as we have with the vans and the oxygen concentrators and the mechanics behind it. All of these different varieties of factors have helped me shape my ideas, and very blessed. So you, before this pandemic time, you visit India or Rajasthan once in a year, right? So Rajasthan from your eyes, share your memories related to Rajasthan. We would like to hear. So, and memories from Rajasthan. I've been to a variety of cities, Jodhpur, Jaipur, Udaipur, Jaisalmer, and Rajasthan is one of the most historically and culturally rich states in India. I remember last summer, no, 2 summers ago actually. We went with my grandparents and my family to one of the historic forts, Umayyad Palace, the Jaisalmer Fort, and the Jul Mahal. We also went shopping in these colorful bazaars. I actually got a very nice dress for my wedding. We attended festivals and fairs. I especially love Rajasthani cuisine. I recall asking my grandma to go take me to where they make the fresh kachoris because they're so good. And we also visited the Jain temples. They're breathtaking. In fact, we saw one of the temples that my grandparents and his dad actually built, and we actually went and visited it, and we prayed together over there. Okay, great. So what are your future plans? In India, we to ask every child, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? बड़े तो आप हो गए, but what are your future plans now? So one day I would like to see if we can create a natural ambulance system for the rural villages of India, so people don't have to walk thousands of miles to get medical care. And I believe that no one should suffer when they're already suffering so much. I want to be that vehicle, the metaphorical vehicle that can take their pain away. And besides that, I aspire to be a doctor, go into the medical field. Probably I want to be a gastroenterologist, just like my parents are. That's my plans for the future. Wow. I mean, to all your dreams. And Hum Rajasthani is a program where we and Simply Jaipur, where we invite all the Rajasthani global pravasis. So what is your experience to be here? So I think it's great. First of all, I'd like to congratulate Commissioner Sab, Srivastava ji, especially you and your effort to connect me to Rajasthan, although I'm in America, to connect me throughout the world and India especially. I wish to continue the work here and continue bettering Rajasthan and to connect with all of my peers in Rajasthan and United States, and hopefully we can come together and make India as great as it can potentially be. And this environment, I look forward to coming again here, and people are great here. Very nice uncles, my grandparents here, the Commissioner Sab, very good, very kind-hearted people who work really hard to produce my ideas. So very big thank you, and thank you so much again. And similarly, I forgot to mention, but one of the most important people is Prem Bandari uncle. He is so busy, but he took the time, me and him talked, and he is the one who produced the idea in a record speed combined with my grandpa. But I would give a big congratulations and thank you to Mr. Prem Bandari Uncle Ji, and especially the Rajasthani Foundation. Yes, very true. Prem Bhandari uncle is really a very energetic and a very motivational person. I know him. And now we have some special guests in the room. So I would like to call Dheeraj sir again.
So Dheeraj sir, over to you. The first question is from you, and then we will invite some other guests. Thank you. It was very nice to hear you, Nikhil. We are all more inspired, more encouraged, and you really have very, very clear and focused thoughts. So, first question comes to me. I am the privileged one. So, my question to you is, how often you speak Hindi? Do you know Hindi? Do you know Marwadi Bhasha? Do you speak Marwadi at home? How do you manage? So I speak Hindi. I can speak it very well. I can speak it. However, due to my, I have a very strong American accent. I can speak it, but it's very hard to understand sometimes. I can speak चलो majority. इस क्वेश्चन का जवाब आप हिंदी में देके बताओ. मेरा हिंदी बहुत अच्छा है. Good. Besides that, I mean, I can fully comprehend and understand what everyone's saying. I just have difficulty speaking it sometimes. I can say most words, but usually it doesn't come out very nice. But I can understand and comprehend fully. I can fully understand your feelings and your emotions at this time on this question, particularly, Nikhil. And with your answer, I must share a memory of my own. I'm reminded of my interview when I appeared for the services RS exam. And in the interview, one of the expert members, he asked me this question: can you speak in Rajasthani language? So I said, not really, but I can read, I can write, I can understand. If you speak anything, I will comprehend and I can tell you what you are saying. So you said exactly the same on almost the same line. So now you mentioned about your peers and the elders who have always been by your side. ये राजस्थान की खासियत है. राजस्थान क्या, हर भारतीय परिवार की खासियत है कि अपने पीढ़ी के साथ में वो खड़े रहते हैं, सपोर्ट करते हैं. तो आपके नाना, आपके दादा, आपके पेरेंट्स, मैं देख रहा हूँ कि प्रभा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं. प्रभा जी, may like to say something? Nani, you have to unmute your mic. I'm also here, Kanak. Kanak साहब, welcome. साथ ही जुड़े हो, नाम प्रभा का भी, हम दोनों साथ ही हैं. Oh, okay, I could read that. तो आप लोग please दोनों साथ में बताइए. You have such a worthy grandson, and we are really privileged to have both of you here. सबसे बड़ी तो बात यह है कि निखिल इज वेरी आज्ञाकारी लड़का है, और जो भी हम लोग उसको डायरेक्शन देते हैं उस डायरेक्शन में वो जाता है. और जैसे हर अच्छी उसकी जो भावना है, उसकी जो दिल है, वो हमेशा अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए उसका दिल हमेशा उधर ही जाता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ. और हम जो लोग कर रहे हैं उसके फुटपाथ पे वो भी चलने की कोशिश कर रहा है. और वो डॉक्टर भी बनने के लिए उसका दिमाग में ये भी है कि भाई डॉक्टर बनते हुए साथ साथ में मैं दूसरों को फ्री, जो ये अमेरिका में इलाज बहुत महंगा है, पर हमारे यहाँ जो भी जैसे इनके फादर मदर का भी है, या ये भी जो है, इसका दिमाग में एक भी कोई भी अगर अंडर प्रिविलेज आदमी आए तो उसको बिना फीस लिए मैं उसकी सेवा कर सकूं. ये एक बहुत बड़ा इसके दिमाग में है. और डेफिनेटली ये लड़का जो है, इसके दिमाग में जो संस्कार हैं वो बिल्कुल अपने घर में हम हिंदी बोलते हैं, मारवाड़ी बोलते हैं. ही आज तो मतलब जो बोलता है वापस जवाब भी देता है. सुबह उठ के प्रार्थना भी करता है, मुजरोसा से लेके शुरू करता है, पैरों के हाथ लगाता है. तो जो संस्कार हैं इसके वो अच्छे संस्कार हैं. और मैं सोचता हूँ कि ये आगे जाके
अपने राजस्थान में कुछ बड़ा काम करने की इच्छा रखता है, और उसके लिए हम सब साथ हैं, और हम मिलके ही कुछ न कुछ ऐसा आपसे मिलके और अशोक जी भाई साहब से मिलके वी विल डू दैट समथिंग बेटर व्हाटएवर वी कैन। थैंक यू। नानी जी कुछ कहेंगे? जय जिनेंद्र, सभी को मेरा नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है सभी को देख के। एंड राइट, चीफ मिनिस्टर अशोक जी गहलोत साहब और आप सभी को देख के, एंड जो कि यहाँ पे हमको कनेक्ट कराया है प्रेम भंडारी साहब ने, एंड जो फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे भाई साहब के मेहता साहब हैं। तो हम लोग शुरू से ही इसके से अवगत है, राजस्थान फाउंडेशन से। एंड स्पेशली जस्ट निखिल के बारे में 2 लाइन बोलना चाहती हूँ कि निखिल का शुरू से ही जब हम लोग कभी भी घर में ऐसा डिस्कशन होता है इस कदर से, तो आई डोंट नो, निखिल छोटा बच्चा था तो भी वो हमारी टेबल पे आके बैठता और पूछता हमेशा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। एंड तो आई डोंट नो, उसका छोटा बचपन भी हमेशा ऐसे ही क्यों, उसको हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी कि हम लोग इतने फॉर्चुनेट है कि हमको सभी फैसिलिटी मिली है, पर जो बच्चे नहीं है उनको कैसे होगा, वो कैसे करेंगे। तो उसका हमेशा कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या सपोर्ट कर सकता हूँ, हमेशा की नहीं, उनको भी मेरी बुक है तो मैं एक और बुक ला देता हूँ जो कि मैं किसी को दे सकता हूँ। और जब हम लोग वीडियो देखते थे अभी इस कोविड सिचुएशन में, और उसने देखा कि ये लंबी लाइन है, ऑक्सीजन नहीं है, मालूम नहीं उसके मन में कैसे ये आइडिया आया। मैं खुद भी शौक हूँ कि उसने कहा कि हम लोग इनको लाइन में ऑक्सीजन कैसे दे सकते हैं। तो उसने कहा कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इनका, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट मूवेबल, इट इज मूवेबल थिंग। सो हम लोग ये वाली उसको वही खड़े खड़े लाइन पे यदि प्रोवाइड कर दे तो उसको कितना आराम मिलेगा। आई डोंट नो उसको कैसे आइडिया, जब मैंने ये सुना मैंने कहा वो इट इज वेरी गुड आइडिया। एंड तो फिर उसने इंट्रोड्यूस करा प्रेम साहब को, एंड इस तरह से काम शुरू हो गया। तो बस ये निखिल के बारे में यही कहना चाहती हूँ मैं कि निखिल इंडिया से बहुत जुड़ा हुआ है, राजस्थान से बहुत जुड़ा हुआ है, और वो चाहता है दिल से कि इस तरह की सेवाएं शुरू से लेके अंत तक अपने जीवन में भी प्रदान करे। ऑक्सीजन व्हील्स के कारण उसको दूसरा आइडिया आया आर्टिफिशियल लिम्ब का, जो जयपुर फूड यूएसए और महावीर विकलांग समिति के थ्रू होता है। तो वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं डेफिनेटली, पर एट द स्पॉट वो नहीं लगा सकते थे कि जहाँ मतलब उनको मरीज को आना पड़ता था कहीं ना कहीं, या कैंप लगाना पड़ता था। तो जब हमने नागपुरा जी में कैंप लगाया तो ये उसने देखा कि भाई ये बहुत मुश्किल है, तो रूरल एरिया के लिए उसने वो व्हील्स ऑन द आर्टिफिशियल लैंप भी शुरू करने का आइडिया दिया, जो चालू हो गया है। थैंक यू। थैंक यू। बहुत अच्छी बातें आपने निखिल के बारे में बताई। वैसे तो हम लोग को अंदाज था कि वो इसी तरीके के हैं, क्योंकि पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरों को तो ज्ञान देने के लिए बहुत लोग आगे आते हैं, बट एग्जाम्पल इज बेटर देन प्रिंसिप। ये जो निखिल ने खुद करके दिखाया है, and where he has set examples and he is leading by examples, so we are very proud of him, no doubt. Now I invite the friend, philosopher and guide for Nikhil, and he is none other than our friend Mr. Prem Bhandari, who has done a wonderful job, और हम सब लोगों को बहुत गर्व है उनके ऊपर। प्रेम भंडारी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि वो ऑलरेडी शायद ड्राइव कर रहे हैं या रास्ते में हैं, और उन्होंने समय निकाला हम लोग के लिए। कुछ समय पहले मेरी भी यही स्थिति थी बट अब मैं अभी बैठ चुका हूं। तो प्रेम भाई, आप अनम्यूट करके जरा ज्ञानवर्धन करें। थैंक यू धीरज श्रीवास्तव साहब। सबसे पहले तो
मैं आपका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। साथ ही आपको एक बात के लिए साधुवाद देना चाह रहा हूं कि जब से आपने राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर के पद से कार्य प्रारंभ किया है, उस दिन से विश्व भर में फैले हुए पूरे राजस्थानियों को मिट्टी से जोड़ने का जो कार्य आप कर रहे हैं, उसकी मुक्त कंठ से अप्रवासी राजस्थानी जो विश्व भर में फैले हुए हैं, उनकी तरफ से मैं आपको साधुवाद दे रहा हूं। आपके साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब का भी आभारी हूं कि ये राजस्थान फाउंडेशन की स्थापना आई 2002 का, जहां तक मुझे याद है, और पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी 2002 जयपुर में हुआ। उसके बाद में के मेहता साहब राणा के तत्कालीन अध्यक्ष, पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन न्यूयॉर्क में हुआ। तो आपसे हमारा जुड़ाव तो अब 2 दशकों से भी ऊपर हो चुका है। निखिल युवा पीढ़ी के लिए एक बड़ा धीमे धीमे प्रेरणा स्रोत बने जा रहा है। आप देखें, जब मेरे पास कॉल आया और जब मेरे से ये डिस्कस किया कि राजू अंकल, ये ऑक्सीजन के कॉन्सेंट्रेटर्स के इसमें हम बस में डाल के और दूर दूर तक गाँवों में क्यों नहीं भेजें, ताकि लोगों को जो सांस लेने में तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल पहुंचने तक में। मैंने कहा I think we have lost connection with Prem ji. आगे। हेलो, हाँ, प्लीज कंटिन्यू। सुनाई दे रहा है? हाँ, आ रहा है। आप अनम्यूट हो गए प्रेम जी, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, you are muted. You are muted. प्रेम जी, you are muted. जी, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए ताकि बेटर आवाज आएगी। म्यूट से हटाइए और वीडियो ऑफ कर लीजिए, देन वी कैन हियर यू बेटर। Sir, I think can we have someone, तब तक उनका connection भी ठीक हो जाएगा। Yeah, I think we have Nikhil's friend, Mr. Dev and Vivek with us. So I call upon Vivek to say a few words and apprise us about something on Nikhil. Hi, my name is Vivek Sharma, as you all may know, and Nikhil has been a longtime friend of mine. And I would just like to say, in our house, we still maintain and celebrate festivals of Gangar Tej and maintain traditions of Rajasthan. And although I'm in New York and really far, I feel deeply connected with my country as well. And there's surely a lot to Rajasthan, and we, the youth, would be happy to participate in such initiatives which would contribute to us knowing more. Thank you so much. You have very rightly pointed out the right thing. And we would be really keen to know and understand from you guys how to stay connected with the coming generations. We would require fresh ideas. Dave, what would you like to say? I think that there could be government organizations in India that could help to contribute our entering into our roots in Rajasthan, and they could probably, enable us to be more connected and to engage ourselves in our communities back in Rajasthan, and help support the people there. Very nice. Thank you so much for your time and your suggestion.
I can also see Hanvansa. Hanvansa is also with us. से कुछ करना चाहो हनुमान जी? Welcome Mehta साहब. I was waiting Hello. for you. नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बिल्कुल फर्स्ट क्लास है धीरे साहब, आप कैसे हैं वहाँ? बस बिल्कुल बढ़िया. मैंने कहा कि आज निखिल जी भी थे और इस बहाने आपको भी हम लोगों ने बहुत दिन बाद आज देखा. आप कुछ हम लोग को कहना चाहेंगे, कुछ आशीर्वाद और सजेशन? नमस्कार, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीबॉडी. और सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने के लिए ये अवसर प्रदान किया है. हम राजस्थानी कार्यक्रम शुरू करके राजस्थान फाउंडेशन ने विश्व भर के राजस्थानियों को अपनी माटी से जोड़ने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर और अच्छी पहल की है और इसके लिए मैं आपको क्या कहते हैं कांग्रेचुलेशंस करता हूं. और वैसे इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को भी बहुत बहुत साधुवाद, उनका बहुत बहुत आभार. उन्होंने ही सबसे पहले इंटरनेशनल राजस्थानी कॉन्क्लेव जयपुर में 2002 में किया था और उसी समय उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि के नेक्स्ट जो कन्वेंशन होगी इंटरनेशनल वो तुझे न्यूयॉर्क में करनी है. और दिल साहब वगैरह सब खड़े थे तो मैंने कहा भाई आप सब लोगों का अगर सपोर्ट होगा तो ये जरूर करेंगे. और सबों के आशीर्वाद से फिर न्यूयॉर्क में अगले साल 2003 में हमने पहली राजस्थान इंटरनेशनल कन्वेंशन आयोजित की और वो बहुत ही सक्सेसफुल रही और सारे न्यूयॉर्क वासियों को जोड़ने के लिए, अपने माटी से जोड़ने के लिए वो एक बहुत ही अच्छा अवसर था. और इसके बाद में सब राजस्थानी जुड़े, अपने और भी नजदीक आए, एक दूसरे को जाने और अपने कई चैरिटेबल प्रोग्राम्स या जो इंडस्ट्रियल प्रोग्राम जो भी राजस्थान में कर सके सबों ने अपने अपने पहल की. तो इसके लिए बहुत ही अच्छा है. ये सारा मुख्यमंत्री जी अपने अशोक गहलोत जी की ये विजन था. और इसके बाद में नेचुरली सेंटर में भी दिल्ली में भी उन्होंने पूरे विश्व के सारे भारतीयों को जोड़ने का वही प्रयास किया जो अशोक गहलोत साहब ने जिसकी शुरुआत की थी. और निखिल मेहता के बारे में जितना कहें उतना कम है. उसने बहुत ही अच्छा कार्य किया. इतनी कम आयु में उसकी जो सोच समझ और जो विजन है तो लगता है कि वो जिंदगी में आगे बहुत ऊंचा बढ़ेगा. कोविड के समय में जब लोगों को दिक्कत हो रही थी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के लिए तो और उनको शहर के अस्पतालों में आने की दिक्कत थी, उस समय निखिल ने ये सुझाव दिया और बसों का प्रबंध किया जिसमें कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स गांवों में भिजवाए जा सके और लोगों को राहत मिले. दूसरा काम उसने बहुत ही अच्छा किया है जयपुर फूड के लिए कि कई लोग बाग जो मोबाइल नहीं है तो उनके लिए मोबाइल वैन तैयार की है ताकि दिव्यांगों के पाम उनके घर पे ही जाकर के लगा पाए. जोधपुर डिवीजन के क्षेत्र में बालोतरा, नाकोड़ा जी, बाड़मेर, जालोर सभी जगह पूरे जोधपुर डिवीजन में. तो ये भी बहुत ही अच्छा कदम उठाया है. और इसके अलावा वैसे जयपुर फुट में प्रेम भंडारी जी की नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और वो डीआर मेहता साहब की जो लीडरशिप है उसके अंदर जो इतने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं जयपुर फूड से तो वो बहुत ही प्रशंसनीय है. और बहुत ही प्रेम भंडारी जी ने सेंट्रल लेवल पे भी काफी अपने प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से भी मुलाकातें की है और उनसे भी काफी करोड़ों रुपए की ली है कंट्रीब्यूशन जिससे कि पूरे विश्व में आर्टिफिशियल लिम्स लगाई जा सके. जो चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, अब वो आज अपने प्रोफेशन कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं या चल सकते हैं, स्पोर्ट्स एथलीट्स में भी भाग ले सकते हैं. तो ये बहुत ही अच्छा काम है. साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से मैं ये चाह रहा हूं कि जोधपुर में 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं अच्छे. सुशीला बोहरा जी की एक वो ब्लाइंड स्कूल कॉलेज चलाते हैं और बहुत ही प्रशंसनीय है. तो इसके बारे में मैंने पहले भी कहा था तो जिस दिन भी मुख्यमंत्री जी के पास समय होगा वो जोधपुर पधारेंगे तो उसके कॉलेज में गर्ल्स और बॉयज 2 हॉस्टल्स का शुभारंभ करेंगे
और मैं मेरे पिताजी के नाम से 1 करोड़ रुपए इस स्कूल को कंट्रीब्यूट करूंगा। इसी तरह एक मूक वगैरह की भी है, डेफ एंड डम्ब की कॉलेज के बारे में बात हुई थी, तो मैंने कहा उसके निर्माण में मैं पूरा खर्च उठाने के लिए तैयार हूँ। और मेरे परिवार का जो ट्रस्ट है उसमें भी अपने ये क्या प्रेम भंडारी जी को ही मैंने चेयरमैन बनाया है, तो वो उनके देख रेख में ये भी काम कर सकते हैं। और भी कोई भी प्रोजेक्ट्स हो जिससे कि लोगों को रोजगार मिल सके जोधपुर क्षेत्र में, तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, हमारा परिवार। और वैसे जोधपुर एक मैं जो लास्ट टाइम गया था जोधपुर यूनिवर्सिटी में, तो उसकी भी दशा देख करके मुझे थोड़ा सा धक्का लगा था, तो उसमें भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस की जरूरत है और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो ऐसे कोई भी प्रोजेक्ट्स हो तो आई वुड बी ओनली हैप्पी टू कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट इन एनी वे एंड वट एवर वे आई कैन। तो धीरज जी, आप राजस्थान फाउंडेशन के कमिश्नर में आपने एक ये आई वुड से कि आपने एक लीप बाउंड प्रोग्रेस कर रहे हैं, और तो इसके अंतर्गत ही ये प्रोजेक्ट्स, चाहे डेफ डम का है, चाहे ब्लाइंड स्कूल का है, या और भी कोई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आपकी देख रेख में राजस्थान फाउंडेशन के अंतर्गत ये सारे कार्य हो, तो आसानी से भी होंगे और तेज रफ्तार से भी जल्दी जल्दी हो सकते हैं। तो बस अंत में मैं आप सब लोगों का धन्यवाद और शुभकामनाएं। अखिल को, निखिल को बहुत शुभकामनाएं, और वो जिंदगी में बहुत तरक्की करे आगे, ऐसी हमारी ब्लेसिंग्स है और शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। Thank you so much, Mehta Sahab, for taking your time out and with your brilliant ideas as always. You have inspired us with your connectivity, your availability of your vision, of your excellent thought processes. और जोधपुर के लिए तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने सही कहा कि कुछ चीजें मिल करके और सोची जा सकती हैं, एंड आई वुड पर्सनली प्रेम भंडारी जी और निखिल मेहता जी के साथ मिलकर कुछ नए इनिशिएटिव दिमाग में हैं, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड भी। हम लोग एक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक स्कीम तैयार की है प्रवासियों के सहयोग से, जोधपुर ही नहीं, जोधपुर डिवीजन, और फिर उसको स्केल अप करके पूरे राजस्थान में उसको लागू करेंगे। वो मैं प्लान आपसे डिस्कस करूंगा। एक जो जयपुर फुट जो इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिसका इतना नोबल पर्पस है, उसके लिए मेरी इच्छा है कि राजस्थान फाउंडेशन और जयपुर फुट यूएसए महावीर विकलांग समिति मिलकर एक किसी भी कंट्री में जहाँ पे हमारी संख्या हो और भी लोग हों डिजर्विंग, वहां पे एक कैंप आयोजित किया जाए और 100-150 लोगों को वहां पे लाभ पहुंचाया जाए, और उसकी पूरी कंसेप्ट से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक वी कैन बी टुगेदर। तो ये कुछ वेरी गुड। और भी कुछ थॉट्स हैं जो मैं सेपरेटली, Nikhil being the leader of the young generation, I want that coming generation should always remember and his own thought कि वो कैसे ऐसे लोगों तक पहुंचे जो नीडी हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, डिजर्विंग हैं। ये नोबल थॉट ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव से बहुत मेल खाती है। मेरा खुद का भी यही सोच है और मानना है कि जो ताकत आपको ईश्वर ने प्रदान की है, और अगर आपके अंदर आपकी नीति और नीयत दोनों साफ है, तो किस तरीके से उसका लाभ नीचे ग्राउंड तक पहुंचे। तो उस दिशा में भी हमारे पास एक अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन के लिए भी कोक्लियर इम्प्लांट, जो बच्चे पैदाइशी डम होते हैं, सुन नहीं पाते, डेफ होते हैं, बोल नहीं पाते, सॉरी, और उसका असर उनके सुनने की शक्ति पर भी पड़ता है। तो राजस्थान सरकार ने ऐसे 5 लाख रुपए पर बच्चे को कोक्लियर इम्प्लांट देना शुरू किया है। इस स्कीम में भी हम आपका सहयोग चाहेंगे, क्योंकि ऑपरेशन होने के बाद में करीब 1 साल तक उसकी निरंतर मॉनिटरिंग और स्पीच थेरेपी होती है, जिसके लिए प्रावधान नहीं है। और उसमें अगर आप लोग जुड़ते हैं तो ये जो कमिंग जनरेशन है
डेफ और डम से हो जाती है बाद में, उनको बहुत सुकून और वो मिल सकता है, और we all can play a very meaningful role here. So I will discuss these ideas at length separately in a smaller group. But अभी प्रेम जी को मैं देख रहा हूँ कि वो अपने ठिकाने पहुंच गए हैं और अभी वो हमारे से बेहतर तरीके से जुड़ सकते हैं। तो आपकी कुछ बातें रह गई हैं प्रेम भाई? आइए प्लीज, अनम्यूट करें प्लीज। जी, थैंक यू श्रीवास्तव साहब, बहुत अच्छा लगा। अभी मेहता साहब मैं आ गया था, जुड़ गया था, और जैसा कि मेहता साहब ने पहले भी कहा था, और मैं मुझे प्रमुख कार्यकर्ता बना रखा है मेहता साहब ने अपने फैमिली ट्रस्ट का। तो बोरा जो स्कूल है उसके लिए 1 करोड़ रुपया आप तैयार समझें। आप तो मुख्यमंत्री जी से बात करें, ब्रिज का काम करें। जैसे ही मुख्यमंत्री जी जोधपुर के लिए समय दे देते हैं तो मेहता साहब और हम आएंगे, 1 करोड़ का चेक आपको हवाले करेंगे और काम शुरू कराएंगे। इसी तरह मूक बगिर जो स्कूल है उसका भी पूरा खर्चा के मेहता साहब एंड चंद्रा मेहता, मेरी सिस्टर, और इनके फंड, इनका जो फैमिली ट्रस्ट है वो देने को तैयार है। ये तो एक बात हुई। अभी आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि जयपुर यूएसए, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति और राजस्थान फाउंडेशन मिलके और एक कैंप हम विदेश में करें। तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। आप देखें, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ पद्म भूषण DR मेहता साहब, हम सब उनके सिपाही हैं। आप देखें, मैं भी पूरा समर्पित रूप से उन्हीं के लिए कार्य कर रहा हूं, और अब तो व्यवसाय करना भी छोड़ दिया। पिछले 10 साल से तो पूरा जीवन ही जयपुर फूड को समर्पित कर दिया एक तरह से। अब आप देखिए कि एक इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी, महात्मा गांधी जी के नाम से एक प्रोग्राम भारत सरकार चला रही है, इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी। इस कार्यक्रम के तहत अब तक 13 देशों में जयपुर फूड के कैंप हुए हैं। हर कैंप पे लगभग आप समझें 2 से सवा 2 करोड़ का खर्चा आ रहा है, और पूरा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब और देश के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला साहब की वजह से ये हमारे कैंप हो रहे हैं। 11 कैंप और हो रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो मार्च में खत्म हो गया था। तो मार्च में जब मैं विदेश सचिव से मिला, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, उन्होंने हमारे कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू कर दिया। उसके तहत भी पिछले दिसंबर में आप देखें कि कितने समर्पित लोग हैं जयपुर फूड के अंदर, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति में, कि इनको मैं लेग वॉरियर कहूंगा। दिसंबर के अंदर युगांडा में इन्होंने कैंप किया, अभी दिसंबर में, कोरोना के बावजूद, और 40 दिनों के अंदर 622 पाम लगाए। तो आप तो सिर्फ जगह तय करें, सरकार पूरा हमें सहयोग कर रही है, फाइल क्लियर हो जाएगी, और उस कैंप में राजस्थान फाउंडेशन की तरफ से आप आए, और हमारी तरफ से मेहता साहब, गोलिया साहब, मैं, और भी हमारे अशोक संचेती साहब, इस तरह की पूरी टीम है यूएस में समर्पित लोगों की। तो हम लोग भी इस कैंप में आएंगे। जगह आप चुने, फाइल क्लियर कराने का काम मेरा, और इस कैंप को हम 2021 में, नहीं तो अर्ली 2022 में ये करें। ये आपका बहुत सुबह आज बहुत अच्छा आपने, तो ये निखिल के लिए भी इंस्पिरेशन होगा। ये बच्चा राजस्थान का भविष्य है, इसे तो आप ब्रांड एम्बेसडर बनाएं इन बच्चों का, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे। तो ही विल बी ए इंस्पिरेशन फॉर राजस्थानी यूथ इवन देयर। दूसरी बात ये कहना चाह रहा हूं कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात करी, अभी हम ये मूक बगिर बच्चों की बात कर रहे थे। देखें आप, यूएस एम्बेसी भी अपने साथ काम करने के तैयार है। आप, मेरे सुझाव मेरा ये रहेगा कि अगला कार्यक्रम आप यूएस एम्बेसी के साथ करें। मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि इनके जो डायरेक्टर नॉर्थ हैं उनको इस सेमिनार में अपन लाएंगे। इनके पास बहुत सारा फंड पड़ा है, ऑलरेडी काम चल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, ऑलरेडी काम चल रहा है। ये सीडीसी के साथ भी काम चल रहा है, सीवरेज का काम चल रहा है, लेकिन काम अंजाम क्यों नहीं ले रहा है वो आपको खुद को भी मालूम है ये चीजें। तो आप जब ब्रिज का काम करेंगे सरकार के साथ में, अधिकारियों के साथ में, तो हम यूएस एम्बेसी, दिल्ली स्थित यूएस एम्बेसी, नॉर्थ इंडिया का जो इनका ऑफिस है, इनके डायरेक्टर मिस्टर रोजनथेल, मैंने पहले भी वेबिनार में उनको साथ लाया था जोधपुर सिस्टर सिटी के लिए। तो आप इसमें लीड लें और हम आपके साथ मिलकर इस विषय पे भी काम करेंगे। और बाकी आप कोई और हमें काम दें तो हमारा सौभाग्य होगा। निखिल तो है ही, के मेहता साहब है ही, लेकिन इस तरह के निखिल, के मेहता साहब, कनकराज जी गोड़िया साहब जैसे यहाँ असंख्य राजस्थानी पूरे विश्व में फैले हुए हैं। इन सबको माड़ा में पिरोने की जरूरत है, और एक बहुत बड़ी माड़ा बन जाएगी तो हम राजस्थान अपनी मिट्टी के देश के आर्थिक विकास में, राजस्थान के आर्थिक विकास में जुड़ पाएंगे।
आर्थिक विकास के साथ साथ ये चैरिटेबल काम भी बिल्कुल। चलते रहने चाहिए, निवेश भी होने चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप बताएं। बिल्कुल प्रेम जी, आपने एकदम सही कहा। माला का जो आपने एग्जाम्पल दिया, तो मैं यही कह सकता हूं कि राजस्थान फाउंडेशन, मेरा ये प्रयास रहेगा कि उस माला की जो धागा है वो हम बने, और आप जैसे जो माला के जो मोती हैं, जो यहाँ और वहाँ यत्र तत्र सर्वत्र हैं, उन सबको एक सूत्र में पिरोया जाए। और वो सूत्र जो है वो राजस्थान फाउंडेशन है, बिना कहे। और मेरा पूरा प्रयास उसी दिशा में मैं काम कर रहा हूँ। हनुमान जी, आपको सुनना चाहते हैं हम लोग। लंदन से आप जुड़े हुए हैं। लेट अस हियर यू आल्सो, बिकॉज आपके आए बिना पूरा नहीं होगा। राम राम से हुकम। हमारे साहब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशन निखिल ने खूब खूब, और आप और प्रेम भंडारी सारो खूब खूब आभार कि आप मैंने जोड़िया था। और बाकी तो मैं ये तो कह सकूं कि हमारे जो प्रेम भंडारी जी जो काम कर रहा है जयपुर फूड रे वास्ते, जयपुर फूड रे मार्फत, वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। और आई थिंक एडो इनिशिएटिव यूके में और दुनिया के बाकी कोना में भी होना चाहिए। जी धीरज सर। thank you Hanman ji, thank you so much. So thank you everyone for being part of this tremendous session, and we leave this session inspired and encouraged to be the change that we want to see in society. Thank you Nikhil for sharing your story with us, a real and true inspiring story. We will surely work together towards a better future. Thank you everyone, all those who joined, for your enthusiastic participation in another awe-inspiring session of Hum Rajasthani. We will continue to bring inspiring stories for the betterment and motivation for our youth and society. And I'm sure we will definitely bring a very positive change to some lives. Thank you everyone for sparing your precious time with us. Stay safe, stay healthy. Over to you, Anshu ji. थैंक यू सो मच सर। और यहाँ पर सबको सुन के, सबकी बातें सुनकर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि वैसा ही सूरज है, वैसा ही चांद है, लेकिन फिर भी कुछ तो है हमारे देश में जो परदेश जैसा नहीं है। तभी तो ये परदेसी होकर भी हमारे देश अपने मन में राजस्थान को बसाकर बैठे हैं। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। और वेरी स्पेशल थैंक्स टू निखिल कि सर एक यहाँ पर इनोवेटिव आइडिया मुझे भी आया कि व्हाई डोंट वी स्टार्ट अ यंग अचीवर्स हम राजस्थानी, जहाँ पर हम सिर्फ यंग अचीवर्स से बात करें, और एक हम राजस्थानी जो हम ट्रेडिशनली अभी तक करते आ रहे हैं। तो ये एक मुझे भी यहाँ पर बैठे बैठे इनोवेटिव थॉट आया है। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दैट ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी का बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। आज जो हमारी बात हुई निखिल मेहता से। सो निखिल, in the end, you want to add on something? Yes, I want to just, my final message is, I hope to continue to be part of the Rajasthani Foundation. I'm already very excited to work towards the cochlear implants for the deaf and the ill. Thank you so much for involving me in the youth. And I'm very lucky to be connected with the Rana Foundation as well, and thankful for the Commissioner Saab, my grandparents, my uncle Prem Bandari ji, my other uncle KK Mehta Saab, and I'm thankful for all of you. And again, thank you for having me on this amazing program, and I'm looking forward to be part of the new young program that you begin to start. Wonderful. Thank you so much. Thank you so much. And the program shall remain incomplete without my informing everyone the remarks what Ashok Gehlot ji had mentioned when he heard Nikhil Mehta in that global pravasi sammelan which we organized globally on the video conference. And he was so excited to hear you, Nikhil. When the program was over, he told me this was an amazing session, and I'm so delighted to see that a person, a third generation person,
who was born and brought up abroad still has such kind of feelings for his homeland, his motherland. So we should strive hard, work hard to bring these future, the future of India. And as was said some time ago, कि पहले brain drain था, but now it is brain gain. So we want to have gain of the brain through you. Thank you very much. थैंक यू धीरज सर. थैंक यू सो मच एवरीवन. तो हम राजस्थान की कड़ी में आप सभी से फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए नमस्कार. थैंक यू अंशु. नमस्कार. थैंक यू बेटा.